Hello students. So this question was asked by one of my students. So this is basically based upon fundamentals of vector. So you must understand couple of things. For example, vector addition. How to add two vectors geometrically, right? Another part is how to take components. Like for example, if a vector in 3D, what are the components it comprised of? किस किस component से मिलके ये बना है, like I x component, y component, j component. जैसे आप force का component लेते हो ना, you can use that method to find out whether uh, what direction that component is going to. So for example, if you will take a look at the options, a vector plus b vector, right? X component of a vector plus b vector. What do you need? Firstly, you need a vector plus b vector. That means you need to understand vector addition. Whether component of x component of a vector plus b vector is positive or negative, it depends upon the direction in which it is pointing towards, right? So let's get started. So firstly, I'll explain briefly here. If you want to add two vectors, let's say a vector here and another vector b vector. So firstly, in xy plane or in xyz plane, any vector you can move anywhere provided you are not changing its magnitude and direction, right? So if I give you a vector here, right? So this is not to scale, so don't mind if line is not straight or something. I'm just explaining you vector addition, right? If you want to add these two vectors, so you shift this vector b vector here to its head of vector a. Now this would be your a vector plus b vector. So if a vector is this, b vector is this, then this vector would be what? A vector plus b vector, right? So you add two vectors by putting the second vector to the head of the first vector. So this arrow is head and this is tail. So you put tail of the second vector to the head of the first vector, and then you match the tail of the first vector to the head of the second vector. That will give you the vector addition, right? Now, so firstly, let's look at the option and make our task easier. So आपको स्मार्ट वर्क करना है, राइट? एकदम से ऐसे नहीं क्वेश्चन देखा शुरू हो गए, राइट? You don't have to do that. So look at the options. So you have to either find out a vector plus b vector, or you have to find a vector minus b vector. And this T option is very easy. Now, v dot a is positive or negative, right? How do you know? So b dot a is vector b dot vector a is magnitude of b into magnitude of a into cos theta. So cos theta is positive when theta is acute, and cos theta is negative when theta is obtuse angle. So can you see in any option where angle between a and b is obtuse? In every options in column 1 a b c d, you will find that this angle between a and b is acute. Theta is less than 90 in every option. So if theta is less than 19, cos theta is going to be positive, right? So T option is going to be correct for each and every option. So T is going to be everywhere. Okay, let's start matching. So this is T. So here also one option is going to be T, here also T, right? In everywhere. So we will keep adding the options here, right? Oh, this should not have opened. Okay, T. Fine. Now T is eliminated. Now you don't have to look at T. Now let's look at the column 1 again. So if you'll see this, if you'll see these vectors, so there are only two types of vector sets that you are given to. So for example, पहले में देखो ये वेक्टर है b वेक्टर, ये वेक्टर a वेक्टर, सेम सेट here यहाँ पे भी है, सेम सेट is here also. What is the change here? Only x and y axis. So now this x axis is negative and this y axis is negative, right? और यहाँ पे ऐसे same formation, same arrangement is here, only changes x and y axis. So what you will do, you will solve just one a
option and then you will try to find the answer for the B. Similarly, you will try to find the answer for A, then you will try to find the answer for B. Sorry, you will try to find the answer for C, and then from that you will try to get the answer for D as well. ठीक है, यही करना है. Now, coming to the option A. So this is the arrangement. So as I told you earlier, either you have to find A plus B or you have to find A minus B. So I have already made here for you. So you can just match your question like this. So A vector is this. I shifted B vector. So B vector was here. I shifted it somewhere here parallel to the original vector, right? Now you can just join it here, and this is going to be your A plus B. Here it makes much sense, right? This is your A plus B, this one. Now you have to find X component and Y component. So X component would be in what direction? I'm sorry. X component is going to be in what direction? This would be X component, right? And what would be Y component? This. X and Y component of what? A vector plus B vector. So both are positive, right? X, this is positive and this is positive. Okay. So what you can do, you can keep adding the options. So which option is matching with A? X component of A plus B is positive. So P is matching. Now simultaneously, let's check for B option as well. So in case of B, let's find what is the direction of A plus B vector. Now here if you'll notice, only change is this. This is in this plane. So this is minus X, right? And this is minus Y, right? So now tell me, if A plus B vector is this, its horizontal component is going to be in what direction? This, and vertical component this. They are not going to change, right? Now tell me one thing, X component of A plus B vector is what? Plus X direction, right? And vertical component is in plus Y direction, right? So which options are matching here? For this one, B option, which one is matching? X component of A plus B is positive, right? P. And Y component of A plus B is negative. Is it negative? No, it is positive here as well. You saw that, right? Vertical. So Y opposite to the Y. So Y के opposite में वो भी जा रहा था TP. Now let's find out A minus B. Okay, vector A minus B. So I have already made that. Okay, so I always, एक previous वाली वीडियो में मैंने बोला है कि whenever you have to add A or you have to do A vector minus B vector, think about it like this. ऐसा सोचो कि A vector को add करना है minus B vector से, right? तो यहाँ पे देखो, पहले वाले में अगर मैं ये चीज इरेज कर दूं यहाँ पे, ठीक है, तो minus B vector would be what? Something like this, in this direction, right? This is minus B vector, and you can shift anywhere provided you are not changing its direction and magnitude. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? This would be your A vector minus B vector. चलो ये भी मैं बना रखा हूँ यहाँ पे A vector minus B vector. अब देखो यहाँ पे इसका X कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ये वाला, और Y कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ये वर्टिकल, ठीक है. तो X कंपोनेंट पॉजिटिव, Y कंपोनेंट पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव है. तो A वाले पार्ट का और क्या आंसर हो जाएगा? देखो, A minus B, X component of A minus B is positive, तो R is correct. और क्या है A minus? Y component of A minus B is negative, नेगेटिव था. देखो यहाँ पे Y component of A minus B is positive as well, वो भी पॉजिटिव है यहाँ पे, राइट? सो इसका ये TPR सही हुआ. तो पहला ऑप्शन हो गया. अब देखो सेकंड वाले में तुरंत कर सकते हैं इसी से. क्या चेंज क्या हुआ है यहाँ पे? ओनली चेंजेस दिस इज, ये माइनस वाई और माइनस एक्स प्लेन में है, ये सेम अरेंजमेंट, राइट? अब देखो इसका एक्स कंपोनेंट जो होगा ए माइनस बी का यही होगा, वाई कंपोनेंट यही होगा, तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा? प्लस एक्स डायरेक्शन में. अरे माइनस एक्स का उल्टा इधर प्लस एक्स ही तो होगा, और माइनस वाई का वाई कंपोनेंट क्या होगा? ये वाला, तो ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है.
तो सेकंड बी वाले ऑप्शन में ये हुआ कि नहीं, फिर से वही आर, मतलब x component of a minus b is positive और y component of a minus b is negative. No, it wasn't negative. See, y component of a minus b is positive as well, right? Now अब आते हैं c में. सिमिलरली हम c का करेंगे और d और c का साइमल्टेनियसली आंसर निकालेंगे, राइट? c वाले में क्या करना है, a प्लस बी निकालना है सेम, और a माइनस बी. तो a वेक्टर ऐसे रहने दो, प्लस b करने के लिए इसी के पैरेलल ऐसे निकाल लो, और यहाँ से ये वेक्टर ऐसे ऐड कर लो. ये a प्लस बी हो जाएगा कि नहीं, मैंने ऑलरेडी कर रखा है इधर आपके लिए. a वेक्टर, b वेक्टर और ये a प्लस बी वेक्टर आपको रफली बनाना है. यू डोंट हैव टू मेजर इट बाय पुटिंग योर स्केल ऑन द पेपर और समथिंग लाइक दैट, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? यू हैव टू बी स्मार्ट हियर. तो यहाँ पे a वेक्टर आ गया, b वेक्टर हो गया, a प्लस बी. अब फिर से इसका कंपोनेंट लो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा ना, a प्लस बी वेक्टर cos थीटा, ऐसे अगर मैग्नीट्यूड लो ऐसे, ठीक है? x कंपोनेंट पॉजिटिव और y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव. और सिमिलरली जो माइनस वाला था, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स था और ये माइनस वाई, ये माइनस वाई और माइनस एक्स. इसका आंसर पहले मैच कर लेते हैं सी वाले का, राइट? सी वाले का देखो, x कंपोनेंट ऑफ a प्लस बी इज पॉजिटिव, ये ट्रू है, और y कंपोनेंट ऑफ a प्लस बी इज नेगेटिव. इज इट और इज इट नॉट? x कंपोनेंट ऑफ a प्लस बी इज पॉजिटिव, y कंपोनेंट ऑफ a प्लस बी इज नेगेटिव. सिमिलरली जैसे फोर्स का करते थे ना, f cos थीटा f sin थीटा, वैसे ही करके देखना है, ठीक है? इधर y नेगेटिव, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हुआ, p एंड q सही हो गया, राइट? c वाले का दोनों सही होगा, p एंड q, राइट? अब a माइनस बी का भी चेक कर लेते हैं, या तो फिर इसका और जल्दी से चेक कर लेते हैं. अगर माइनस रखोगे तब, अगर यहाँ पे माइनस एक्स माइनस वाई रहेगा, तो a प्लस बी का x कंपोनेंट पॉजिटिव होगा और a प्लस बी का y कंपोनेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा. तो इसमें देखो, a प्लस बी का x कंपोनेंट इज पॉजिटिव, a प्लस बी का y कंपोनेंट इज नेगेटिव. तो इसमें भी वही आ गया, p एंड q. तो p एंड q आर करेक्ट इन बोथ, राइट? अब ये वाला करते हैं, a माइनस बी निकालते हैं. a माइनस बी मैंने बना रखा है, a वेक्टर ऐसे ही रहने दिया मैंने, ये पुराना वाला ही तो है ये वाला. इस वेक्टर को हमने रिवर्स कर दिया, रिवर्स करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है? ये वेक्टर हमारा हो गया a, ये वाला a वेक्टर हो गया, ये वाला, दिस इज a वेक्टर एंड दिस इज b वेक्टर एंड दिस इज योर a माइनस बी. तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये होगा और हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा, a, राइट? तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा किधर, x डायरेक्शन में, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा ये y डायरेक्शन में, राइट? तो वर्टिकल कंपोनेंट नेगेटिव आ रहा है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पॉजिटिव. तो देखते हैं a माइनस बी, अभी c वाला कर रहे थे ना, a माइनस बी का x कंपोनेंट पॉजिटिव आ रहा है और y कंपोनेंट नेगेटिव, वही तो कर रहे थे हम. a माइनस बी का x कंपोनेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में, और वर्टिकल कंपोनेंट किस डायरेक्शन में, नेगेटिव y. तो इसका जो है पहले का सी वाले का पी क्यू आर एस भी सही है, राइट? और उसी तरह से आप निकाल लेना इसका वाई, इसका भी आ जाएगा पी क्यू आर एस, ठीक है? मैं दिखा देता हूँ जल्दी से. अगर ये एक्स वाई होता, माइनस एक्स वाई, तो कोई फर्क पड़ता? ये ये माइनस वाई हो गया और ये माइनस एक्स. देख लो, जो x कंपोनेंट है a माइनस बी का वो पॉजिटिव x डायरेक्शन, y कंपोनेंट है जो a माइनस बी का वो नेगेटिव y डायरेक्शन, ठीक है? तो उसका भी सही हो गया, ओके? सो आई होप you guys are enjoying my videos. Okay, you can give me suggestions in the comment box, or you can personally tell me through email or join my telegram group where you can ask questions and you can post your any query, any doubt, right? And any suggestions you might have. Okay, so thank you so much for watching the video and subscribe to my channel. Tell your friends about it, they can also get benefited, right? Have a great learning, all the best, thank you.